Okay. What I did is I just wrote my Terzaki's equation. You just need to remember the Terzaki's equation. उस Terzaki's equation में as phi is equal to 0, this has been gone, this has been gone. Only the remaining term was C and C, which was remaining. Now this QU, that is ultimate bearing capacity, I've adjusted it to QB, that is tip resistance या फिर tip का bearing capacity is equal to CUB. CU मतलब undrained, cohesion at your this tip. So the B is coming into NC. इसमें एक ही चीज याद रखना था कि NC का जो वैल्यू है, NC का जो वैल्यू है, इट इज फिक्स्ड वैल्यू, इट इज 9, इट इज ऑलवेज 9 फॉर ए क्ले, इट इज ऑलवेज 9 फॉर ए क्ले. ठीक है, तो हमने निकाला this equation and I will name this equation from now onwards. This is my equation number 1 which we have derived till now. Now हमने अभी तक सिर्फ इक्वेशन निकाला ऑन बेसिस ऑफ टिप रेजिस्टेंस, राइट. अब मैं फ्रिक्शन की बात करता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड पे कमिंग. या अब मैं फ्रिक्शन की बात करता हूँ. इट मींस दैट ये मेरा पाइल है, ऑलराइट, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, इस पे कुछ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी रहेगा जो मेरे पाइल के लोड को कैरी करेगा. So that we have to find out. So we are to find Fs, that is friction resistance. Okay. Now before going to friction, हमने shear strength में एक equation देखा था, that is shear strength equal to cohesion plus sigma tan phi. As the soil is cohesive soil, it means that you have phi equal to 0. सिर्फ cohesion है, friction नहीं है, तो this part becomes 0 and you get your shear strength is taken by cohesion. Your shear strength is taken by cohesion. Okay. Now this you need to understand. Your Fs or your shear, the friction is equal to Ca. A Ca is a term, basically it's a cohesion term, but it's a term. It means that unit addition. अभी एडिशन करके क्यों है, हम कोहेजन क्यों नहीं बोल रहे यहाँ पे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. कोहेजन होता है जब दोनों मटेरियल सेम होते हैं. अगर दोनों सॉइल है, जैसे कोहेजन. But if there are two other materials, there is an addition between them. Okay. Now this Ca, I can write in the terms of Cu. I can write in the terms of Cu as alpha times Cu. It's a term. Ca एक टर्म है, मैंने उसको Cu के टर्म में लिखा क्योंकि मुझे Cu हर सॉइल का मुझे अनड्रेन्ड कोहेजन मिलता है. Ca I can't find, so it's always equal to alpha times Cu. Now अब आया alpha. I'll just write it here. Alpha means addition factor. Alpha means addition factor. मतलब कितना addition है, that is given by alpha. Now if you have soft clay, or if you have a NCC soil, अगर ज्यादा याद रखो कि अगर soft clay रहता और तुम्हारा पाइल उसके अंदर है, addition रहेगा ही नहीं क्योंकि बहुत soft है, right? तो वो तो सीधा अंदर जाएगा पाइल. So here your addition or addition factor is equal to 1. Addition factor is equal to 1. But if you have stiff clay, then addition factor is less than 1. This is required in MCQ part if you are going for gate or something. For Mumbai University, they give addition factor का value and you have to just put it. The concept is this: अगर soft clay रहेगा, अगर आपके पास क्या बोलूं, अगर soft clay है, अगर आप पाइल डालोगे तो imagine करो कि पाइल उसके अंदर सीधा की सीधा अंदर ही घुस जाएगा. So there is no addition factor. Addition रहेगा ही नहीं, so it is taken as 1. स्टिफ क्ले रहेगा, जैसे आप आटा लेते हो या फिर उसके अंदर कुछ पेन डालते हो, देयर इज एन एडिशन बिटवीन देम, राइट. एडिशन बिटवीन योर मोल्ड एंड योर डव एंड योर पेन देयर, सो इट्स लेस देन 1. So in total, so this is my equation number 2 that I have, Fs. Now in total, okay, in total I have to write an equation. So I know that my Qu is equal to Qb plus Qs. That is मेरा जो भी पाइल है उसका जो अल्टीमेट लोड जो लेगा, it depends upon tip resistance, that is Qb, and friction resistance, which is Qs. मैंने लिख दिया. You know that Qb is equal to Qb, that is bearing capacity at the base, into area of, all right, and plus Qs is equal to unit friction, that is Fs, times your area of circumference of the pile, that is As. Once you take the numerical, it will be more clear to you. We are going to take the numerical soon. Now I will just write the Qb value which I have written, that is in the equation number 1. अगर आप पीछे जाते हो,
There it is. This one. QB equal to CUB NC, and FS is equal to alpha CU, and FS equal to alpha CU. I'll just write it in the equation which I have required here. So QB equal to CUB NC into AB plus FS is equal to alpha CU into AS, and this is the equation that you have to remember, and this is your equation number 3. This is very important equation that you have to remember. So ultimate load capacity of a single pile in a in a cohesive soil, it is given by this equation. It is given by this equation. अगर आपको कोई पूछता है कि आपको सेफ लोड कैरी करना है, ये पाइल कितना सेफ लोड कैरी करेगा, then this is given by your ultimate load divided by factor of safety, then that becomes your safe load. अब सेफ लोड का मैंने जैसे बोला, जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो सिर्फ हम सेफ लोड ही कैरी करने के लिए पाइल को अलाउ करते हैं. I hope you have got an idea what is a safe load, what is an ultimate load. I will give again your factor of safety. It is around 2.5. The factor of safety is around 2.5. Safe load, ultimate load का मैं एक रिव्यू देता हूं आपको, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है. Let me take my safe load as 100. So it will be QU. Let me take my factor of safety somewhere around 3. इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं. This is my QC. Example there. My ultimate load if I calculate, it would be 300. इसका मतलब ये है कि आपका जो पाइल है वो 300 लोड ले सकता है, बट जो आप अलाउ कर रहे हो सेफ्टी के लिए, दैट इज ओनली 100. तो while डिजाइनिंग ना, we always provide safe load only. अपने को नहीं चाहिए ना पाइल, मतलब 300 पे अगर आप लोड दे रहे हो पाइल को तो पाइल टूट जाएगा. सो इन डिजाइन या फिर कौन सा भी हम डिजाइन करते हैं, we always take safe load. This safe load is also called as allowable load also. This is a concept. The safe load is also called as allowable load. Now I hope you got the concept. Safe load I have taken is 100 QU upon 3. तो मुझे ultimate load कितना है, 300 आया. ठीक है. सेफ हमेशा छोटा होता है, अल्टीमेट हमेशा बड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो आपका स्ट्रक्चर कुछ काम का नहीं है. This is how we design. Even if you are going in the 4th year, like there is a design subject, you would be having the same thing there also. ठीक है. So we have derived an important formula for a cohesive soil. Next derivation that we're going to do on the similar basis is for cohesionless soil. Let me write. We are finding the capacity. We are going to find the capacity of single pile in cohesionless soil. Whenever I'm telling cohesionless soil, इसका मतलब आपका C is equal to 0. ठीक है. Let me draw my pile again. This is my pile which is there. Let there be water table somewhere here. This is my length of the pile which I have. Okay. Now, the first step in the derivation part is we will find QB, because you know that कि आपका जो पाइल अल्टीमेट लोड जो लेगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, पहला मैं बियरिंग के लिए निकालूंगा, फिर फ्रिक्शन का निकालूंगा. तो आई एम फाइंडिंग माय QB. ठीक है. From Terzaghi again, I know the bearing capacity equation. It is QU equal to CNC plus gamma D NQ plus 0.5 gamma. I'm telling C is equal to 0. This term is equal to 0. This term vanishes out. क्या बचता है मेरे पास बचता है gamma D NQ, this Q, gamma D NQ plus 0.5 gamma D N gamma. Okay. Plus gamma B and gamma. Now I've told you in pile इसके नीचे का soil हम लेते नहीं है, so this also vanishes out. What is remaining? Only the remaining part is this one, that is gamma D NQ is remaining. I'll just write it. My QU is equal to gamma D NQ. Now going with the concept, what do you mean by this gamma D is, ये total soil जो है यहाँ पे कुछ effective stress पैदा करेगा, that is your gamma D. That is your gamma into D. So I can write it as my effective vertical stress times NQ. And this is my cubic equation. So again, I'm writing it here. My sigma dash V is my effective vertical stress at pile X. Now, next up NQ कैसे निकालोगे? For NQ, basically there's a graph which will be, once we do with the sum, we can go with it.
The name is same. It's also called as bearing capacity factor. NQ मतलब यहाँ पे भी same है जैसे ट्रांजैक्शन में पढ़ा था. NC, NQ, N gamma, they are bearing capacity factors. Now it depends upon L by D ratio and we see the graph. हम इसको ग्राफ से निकालते हैं. अब सबसे मेन थिंग, हम सिग्मा डैश V कैसे निकालते हैं? आप सबको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने आता है. इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस वन इज 0 बिकॉज इसके ऊपर सॉइल नहीं है इनटू डी. तो हम कैसे बनाते थे इफेक्टिव स्ट्रेस? अगर मैं आपको बताऊं, हम ऐसे बनाते थे इफेक्टिव स्ट्रेस. बट पाइल्स के अंदर ये गलत है. बट पाइल के अंदर ये गलत है. ऐसा नहीं आता. दिस नॉट द स्ट्रेस वेरिएशन दैट यू कैन हैव. स्ट्रेस का वेरिएशन इन पाइल्स इट विल बी समथिंग इन दिस फॉर्मेट. I'll show you. Erasing this. Drawing a vertical line. Till some depth, it would be linear. Till some depth, it would be linear. Linear मतलब it's a straight line. उसके बाद it becomes constant. उसके बाद it becomes constant. This is the variation of stress diagram that you can have for a pipe. This is the variation of stress diagram that you can have for a pipe. So here it is constant. Okay, now I'm putting the values. Now till the depth of DC basically it's linear. Till the depth of DC basically it's linear, and this value is gamma dash into DC. This value is gamma dash into DC, and so as this is constant also, this value is also same, gamma dash into DC. What is DC now? DC is critical depth. DC is critical depth. Again I'm telling what we have discussed. We have discussed एक सिंगल पाइल अगर वो कोहेजन लेस सॉइल पे हो, जैसे सैंडी सॉइल या फिर ग्रेवल सॉइल पे हो, तो उसका एक्शन कैसे रहेगा. हमें ये पता था कि QU इक्वल टू QB प्लस QS, ये अपने को पता था. इसी बेस पे हमने पहला QB निकालने की कोशिश की. हमने ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखा, C0 था, ये निकल गया. इसके नीचे का हम सॉइल कभी लेते नहीं है. मतलब while during the analysis of the pile foundation नीचे का सॉइल का कोई इफेक्ट नहीं होता. सो ये भी निकल गया. बचा ये वाला फैक्टर. इसमें से Q सिग्मा इज फॉर स्ट्रेस, V इज फॉर वर्टिकल एंड सिग्मा डैश इज फॉर इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस. मैंने इसको नाम दिया इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस करके. मुझे QB का इक्वेशन मिला व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा डैश V इनटू NQ, एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 4 व्हिच आई हैड. ओके, इसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि द स्ट्रेस वेरिएशन फॉर अ पाइल इट्स नॉट लीनियर. DC द सम डिस्टेंस DC, इस डिस्टेंस तक स्ट्रेस इज लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है. दिस इज हाउ अ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर अ पाइल इन कोहेजन लेस सॉइल लुक्स लाइक. जब भी कोहेजन लेस सॉइल है तो ये इस सिचुएशन आता है. अब आप पूछोगे सर DC का वैल्यू कितना हो सकता है? बेसिकली द DC का वैल्यू इट रेंजेस फ्रॉम 15 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइल टू 20 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइल. जितना पाइल का डायमीटर है, ये पाइल का डायमीटर जितना है, 15 से लेकर 20 तक इसका डिस्टेंस है. So this, from this given data we can write QB. Now we will find FS. To find FS. Again, I've told you FS means skin resistance which is going on the pile. Whenever you are calling with resistance, आपको पहले ही याद रहना चाहिए shear resistance के बारे में. तो shear resistance tan phi. ठीक है, हम कौन से सॉइल के लिए देख रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर कोहेजन लेस सॉइल. अगर कोहेजन लेस सॉइल मतलब C इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0. सो व्हाट यू गेट इज S इक्वल टू सिग्मा. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत टर्म्स आपको पता रहना चाहिए. What is sigma and what is phi? I will start with sigma. Sigma means in shear strength also we have discussed this. Sigma means the normal stress. And phi means the angle of friction. I'll just draw the pile in a good way because I need to draw it. Done. Yeah. So this is my ground surface that I have. ठीक है. Now normal stress का मतलब क्या होता है? इस पाइल के ऊपर normally एक stress आएगा, that is your normal stress, right? हमने चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ा था lateral earth pressure के बारे में, right? Lateral earth pressure, जब नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली जो स्ट्रेस रहता है, जो सॉइल पाइल के ऊपर डालेगा, फिर सॉइल हॉरिजॉन्टली जो भी स्ट्रेस आता है, इट्स कॉल्ड एज लैटरल अर्थ प्रेशर, दैट इज सिग्मा एच, एंड इट्स इफेक्टिव, सो आई एम टेकिंग इट्स इफेक्टिव. हमने ये भी पढ़ा था कि लैटरल अर्थ प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू K टाइम्स वर्टिकल स्ट्रेस, मतलब इट्स ऑलवेज इक्वल टू कोएफिशिएंट टाइम्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस. तो वर्टिकल स्ट्रेस कितना रहेगा? इट वुड बी सिग्मा V डैश. So now I'm just confining all the terms from here. Instead of this sigma, I can write sigma dash H, that is effective lateral stress, and tan of
phi is what? Angle of friction. अब क्या होता है ना, जब भी हम लोग shear strength की बात कर रहे थे, दोनों मटेरियल सेम थे, दोनों मटेरियल सेम मतलब दोनों सॉइल थे, तो दोनों सॉइल होने की वजह से there's an angle of friction between them. But यहाँ पे क्या हो रहा है, you have a pile and you have a soil. यहाँ पे angle of friction नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और है, and that term is called as delta. That term is called as delta. And this delta, it means wall friction, and it means angle of wall friction. ये पाइल का वॉल का जो फ्रिक्शन है, पाइल का वॉल और जो सॉइल का जो फ्रिक्शन है, that is your delta. More precisely, I can write sigma dash h equal to in this format. That is k times sigma v dash into tan of delta. Where, okay, into tan of delta. Okay. Now this is for the shear strength, right? I've told you shear strength मतलब replace it with F. अब सिर्फ हम terms के नाम लिखेंगे वापस. F means your unit friction. I'm not writing it again. K means your coefficient of earth pressure. You know this, coefficient of earth pressure. Okay. Sigma dash V is stress. Delta, it is called as wall friction. And tan of delta is called as coefficient of friction. Tan of delta is called as coefficient of friction. एक चीज जो तुम्हें याद रखना है, जब भी मैं ये वर्टिकल स्ट्रेस की बात करता हूं, इट डिपेंड अपॉन द हाइट, राइट? इस यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस कुछ अलग है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस निकालते हैं. सो आई कैन कॉल दिस एज सिग्मा एवी डैश. हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस? वंस वी आर इन द सम, यू विल गेट टू. सो वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5. तो हमने कोहेजन लेस सॉइल के लिए, जैसे सैंडी सॉइल है, उसके लिए हमने क्यूबी भी निकाला, उसके लिए हमने क्यूबी भी निकाला, और सेम सॉइल के लिए हमने एफएस भी निकाला, निकाल दिया. अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे. सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, दैट इज, sorry, my QU is equal to end bearing plus friction resistance. End bearing is given by QB times area of pile at base plus friction resistance circumference. This QB I can write it as sigma V dash, okay, K times, so sorry, this I can write it as K times sigma AB dash into tan of delta times your AB plus, I'm so sorry, one second. What is your QB? Let me check here only. Yeah, your QB equal to sigma V dash into NQ. So your QB equal to sigma V dash into NQ times your AB plus F means K sigma AB dash into tan of delta. That is K sigma AB dash into tan of delta into AS. This is the equation of a pile when it is in cohesionless soil, and this is my equation number 6, and this is my equation number 6. So 2 equations you have to remember. Any format you can remember in this format, you can remember in the last formula format, like this big formula, however you want to remember, you can remember it. Okay, now खत्म नहीं हुआ, थोड़ा स्टोरी बाकी है. अब ये जो K है, ये कहां से मिलेगा? ये जो डेल्टा है, ये भी कहां से मिलेगा? Now इसके लिए there's a table actually for driven piles. driven piles का मैंने आपको मतलब बता दिया. driven मतलब आप, for driven piles, I'm just writing the table. If you have pile material delta, these are the values of K that you can have. It depends upon the sand, if it is a loose sand or if it is dense sand. Now this equation is valid for cohesionless soil, so सिर्फ sand आया यहाँ पे. Okay. So let me write 3 materials that, and if you are having a timber pile. For a steel pile, the value for delta, it is 20, and for the values for K, for a loose sand, it is 0.5 and it is 1. For a concrete pile, the value for delta, it is 0.75 times of 5, and loose sand it is 1, dense sand it is 1. For a timber, it is 0.675 and it is 1.5 and 4. This is for a driven pile. If you're having a board pile, then your delta is equal to 5. That is, angle between your wall friction is same as your soil between soil. So delta equal to 5.
if excavation is done on dry soil, अगर dry soil हुआ तो delta equal to 5. Delta is less than 5 if slurry is used. If slurry is used. And K, roughly it is between 1 minus sine phi. For a board pile, K is roughly equal to 1 minus sine phi. There's one more formulas which you have to remember. That completes our this part. As per IS code, as per IS, that is 2911, ये एक बुक है, आपको पता रहेगा IS कोड क्या होता है. IS code is like a book which is given all the formulas research के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है. As per IS code for both the piles, that is if it is a board pile or driven pile, the value is same. So it is delta equal to 5 and K value ranges from 1 to 3. अब आप बोलोगे सर कितना याद रखना पड़ेगा. मैं बोलता हूं आपको, आप कंक्रीट का याद रखो बिकॉज जो भी सम्स आएंगे आपको कंक्रीट के आएंगे, स्टील का ज्यादातर सम्स. ड्राइवन बोर्ड पाइल्स के वैल्यू को याद रखो और आईएस कोड के वैल्यू को याद रखो. दैट्स सफिशिएंट फॉर. एनी डाउट्स स्टिल हियर व्हाइल वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पार्ट? लेट मी चेक इन द चैट. Okay, someone has put the chat like, sir, Taj Mahal also on wooden pile. That wooden pile will get water from the near river to become more stable and rigid. Okay. The actually I don't know the Taj Mahal has a wooden pile or not. First thing. The second thing, the problem with Venice is like हर piles ना बहुत distance नहीं है, बहुत बहुत कम distance पे रखा है. तो क्या हुआ ना, वो जो पानी है उसमें sunlight भी नहीं आ रहा. So that is the case. तो वहाँ पे anaerobic reaction हो गया और वो wooden pile खराब हो रहा है. Also there's an other factors also. बट द मेन फैक्टर इज वहाँ का जो पानी है वो खराब हो रहा है. शायद ताजमहल में वो एक प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज द सनलाइट इज देयर, इट्स नॉट फुल्ली कवर्ड विद द स्ट्रक्चर देयर. सो दैट माइट बी द थिंग. सो इट इज स्टेबल बिकॉज आई डोंट नो it has a wooden pile or not. Okay, I think I have to stop this meeting here. You can rejoin. Only few things are remaining. Then we can quickly move to that. Just click on the same link. I'm just stopping this one.